along the x-axis, y-axis, and z-axis. The three directions can be represented by I cap, j cap, k cap. Okay. Now it can be further written as I cap is equal to x vector upon x. That means यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो. तो न्यूमरेटर में वेक्टर है और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड है. सिमिलरली फॉर j cap, सिमिलरली फॉर k cap. How can you write about how do you write the vector along the x-axis? आप लिख दो मैग्नीट्यूड टाइम्स I cap. Similarly, magnitude in the y direction times j cap. Similarly, like this. समझ में आ रहा है सबको? अब इसका जो डायरेक्शन है I cap, j cap, k cap, हम लोग उसको RHC से निकालते हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स दैट यू हैव टू टेक, there is a diagram I'll show you. Let's say A represents x, I cap. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा z एक्सिस है? उसके लिए the method is you will take the fingers of your index finger and the middle finger of your right hand. So you will use this thing. X means I cap is in this direction. Y, that means j cap is in the direction of middle finger. Is that clear? तो ये दोनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. Now what you have to do is take all the four fingers of your right hand in the direction of I cap first. Then curl them in the direction of j cap. The direction of thumb will give you the direction of k cap. Is that clear? ठीक है? नो सर. नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं. So let me explain you with the help of let me share my camera. Do you see my right hand? यस सर. ठीक है, अब देखो ये मेरा राइट हैंड है. So let's say all the four fingers, okay, all the four fingers, that means my palm is flat. इस डायरेक्शन में आई कैप है, let us say. ठीक है, and then I curl them in the direction of j cap. आई कैप से j cap की तरफ मैंने कर्ल किया. Is it clear? यस सर. Thumb will give me the direction of k cap. I j k. ओके सर, ओके. ठीक है. गॉट इट. सर Yeah. सर Yeah, tell me. इस डायग्राम में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. यू टेक योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, देन कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप. के कैप will give you the direction of the thumb will give you the direction of k cap. हो गया बेटा? यस सर. ठीक है, चलो एक और आपको मैं चांस देता हूँ. आप मुझे बताइएगा, है ना. लेट्स से आपको ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, दिस इज लेट्स से आई कैप एंड दिस इज
जी कैप किस डायरेक्शन में होगा? वो ऐसे ऊपर होगा या नीचे होगा? अब सर नीचे। Will it be like this or will it be like this? G cap सर you नीचे है। you have first option this one, second option this one. तब अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए 1 और 2. रिमेंबर के कैप दिया है मैंने. आई हैव नॉट गिवन यू. Yes, the answer is 2. अगर आप आपकी राइट हैंड की फिंगर्स को पहले आई कैप की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर के कैप जे कैप की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, मतलब ऐसे कर्ल करेंगे, तो आपका के कैप इधर आएगा. अब ट्राई करके देखना. तो फिजिक्स नीड्स लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन. ठीक है. Now there is one more category of vectors that we call it as polar vectors, which will be rarely used in your coursework unless until you get into some good decent engineering college. ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग दो पैरामीटर्स का यूज करते हैं. वन पैरामीटर इज आर्क, another parameter is angle that it makes with the x axis. अगर ये प्लेनर वेक्टर है, मतलब किसी एक xy प्लेन में है, तो एंगल थीटा alone will be sufficient. If it lies in three-dimensional space, then you have to use at least two angles alpha and beta with two standard mutually perpendicular directions. So just write this down. Don't try to understand all the aspects क्योंकि थोड़ा सा advanced है and it will waste a lot of time initially. अभी हमको ये नहीं करना. सिर्फ आप लिख लीजिए. It should be in your knowledge. हेलो सर. Yes. सर पोलर वेक्टर के कोई एग्जांपल और थोड़े. किसकी एग्जाम्पल? पोलर वेक्टर. अभी जरूरत नहीं बेटा. लीव इट. आपको सिर्फ पता होना चाहिए दैट आपके नॉलेज पॉइंट के लिए है वो. इसको डिटेल में हम लोग बहुत बाद में करेंगे. जब 12th में आपका वेक्टर अलजेब्रा आएगा तब करेंगे मैथ्स में वो भी. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. ओके. नाउ दिस इज वन मोर एडवांस कैटेगरी ऑफ वेक्टर दैट वी कॉल इट एज एक्सियल वेक्टर और सूडो वेक्टर्स. इसको हम लोग सूडो वेक्टर भी बोलते हैं. So they are basically used to depict some rotational effect of the motion of the body. ठीक है. So if a body is rotating in a anti-clockwise sense or clockwise sense, then how do you represent its position? How do you represent its momentum? How do you represent its angular velocity, angular momentum, torque? So there are certain advanced terms that you will come across in your chapter rotational motion.
So basically these are the vectors which are parallel to the axis of rotation. That is why they are known as axial vectors. So write down the entire stuff. So as the name suggests, coplanar means the vectors, they lie in one single plane. Okay, now you can see that this green thing that you can see here, this is representing one particular plane, and all the three vectors A, B, C, they are in this plane, particular plane. So A, B, C, they will be called as coplanar vectors. They need not be of the same type. They need not be parallel, collinear, co-initiating. No other condition. Coplanar means one simple thing, that they lie in one single plane. ठीक है ना? Very common sense thing. Similarly, you have something known as co-initial vectors, which we have already seen. Co-initial means they originate from the same point. Then free vectors. Free vector is a term used in a specific case wherein if you shift the vector, it does not affect the consequences. अगर wind is blowing in a particular direction, and if you wish to draw its vector, whether you draw it from Akota or whether you draw it from Alkapuri, if the direction of wind velocity is same, it does not really matter where does that origin of vector comes from. Is it clear? So these are some of the points which might be used. Some of the vectors cannot be moved at all. If you have moved from your house in Akota to Alkapuri center, you cannot say this is same as being moved from Makarpura to Burhanpura, let us say, to your place here. These two vectors could be parallel. They could be of same type, but you cannot say that both of them are equal vectors because they are not originating from the same point. So some vectors are free to move, some vectors they are not free to move. When I say they are free to move, which basically means that you cannot change the direction. Direction will remain same. They have just what? They have gone parallel to the original direction. Is that clear? So these are some of the common terminologies that you will be using. So with this, my today's agenda is over. Now, if you guys have any doubt, you can ask me now.